स्क्रीन शो होगी हिना? जी स्क्रीन सर। शो होगी? जी सर। जी सर, हो गई है। ये हिना किधर है? ये क्यों, ये तो नहीं कि क्लास ज्वाइन करके आप लोग आराम से बैठ जाते हैं? इधर से नो सर। ज्वाइन कर दो। इसको आवाज नहीं आ रही मेरी? हिना हैदर, ये क्लास ज्वाइन की हुई है। आवाज आ रही सबको? यस सर। जी सर, आ रही जी है। सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो करना है बेटा, ये सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स है। एस्टर आपको पता है कि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आपस में रिएक्शन होता है, इसमें वाटर आपका रिमूव हो जाएगा और ये एस्टर जो है ना आपका, ये एस्टर लिंक जो है ना ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ये आपका ROH है अल्कोहल का, ये OH है, और ये आपका क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक साइड से आपका OH है और एक साइड से हाइड्रोजन है, ये रिमूव होंगे तो आपका वाटर आ जाएगा, और ये जो आपका लिंक जो है ये एस्टर लिंक है, और इसको एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। ये एस्टर जो है ना ये आपके फ्लेवर भी होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं ना ये वो आपके एस्टर्स होते हैं। जिस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए होगा, ये कार्बन चेंज जो है वो आप चेंज करें तो आपका फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। द फ्लेवर ऑफ ऑलमोस्ट एनी फ्रूट एंड एनी फूड इज ड्यू टू प्राइमरली टू अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एस्टर. Since ester can be easily produced in the laboratory by a process called esterification, कि ये जो प्रोसेस है इसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस सिंथेटिक एस्टर, क्योंकि इनको जो अपनी रिक्वायर्ड जो ना वो फ्लेवर के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। While naturally obtained ester are preferable, they are not often suitable for the food and drink industry. कॉस्टली होते हैं। Natural esters can produce off flavor when heated or may have a short shelf life. Since the demand for flavor has increased dramatically over the year, the availability of natural flavor cannot meet the demand. ये नेचुरली जो आपके फ्लेवर होते हैं वो तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होते हैं, और आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप एग्जांपल ले लें, किसी की कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, तो इनके जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और ये प्रोडक्शन जो है और उसके अंदर से फिर एक्सट्रैक्ट करके और वो देना इंडस्ट्री को, एक तो कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और प्रोडक्ट भी कम है अगर हम नेचुरली लें। और इसके बरक्स अगर आप सिंथेटिकली ये बना लें तो ये आपको इतना कॉस्टली भी नहीं होगा, और इसके प्रोडक्ट भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। The use of synthetic flavor is more common than the use of natural flavoring. In fact, many of the flavor you associate with fruit have nothing to do with the natural flavor. These synthetic flavor have been enhanced by the flavoring industry. प्रिंसिपल आपका ये मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका जो प्रिंसिपल है इसके अंदर एस्टेरिफिकेशन का है। देन हम आप देखते हैं आगे इक्विपमेंट और केमिकल। वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कंसंट्रेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस, सेपरेटिंग फनल है, और ब्लू लिटमस पेपर पीएच को चेक करने के लिए डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स है। क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये जो ऊपर है आपका परफॉर्म रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स होता है कि आपने क्या करना है, ये आगे डायग्राम दी है, ये रिफ्लेक्स है कि ये आरबी के अंदर आपने अपना मटेरियल डाल दिया, उसके बाद ये कंडेंसर लगा दिया आपने, ठीक है, ये क्लम्प लगे हुए हैं, और यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी निकलेगा, इसको नीचे से आपने हीट करना है, ये हीटिंग मेंटल है। तो ये प्रोसेस जो है ना ये रिफ्लेक्स कहलाता है। क्लियर? तो ये आपका अब आगे आएगा प्रोसीजर।
use following table, choose a flavor, the flavor is matched with the carboxylic acid and the alcohol. कि अगर आपने बनाना फ्लेवर करना है, ये फ्लेवर आएगा, ये फेवर लिखा हुआ है कि बनाना फ्लेवर अगर है तो उसके लिए आपको अल्कोहल चाहिए, आइसोमाइल अल्कोहल, ठीक हो गया। और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, एस्टिक एसिड है। अगर बेंजोइल अल्कोहल और एस्टिक एसिड यूज करेंगे तो पीच फ्लेवर। पियर के लिए प्रोपानोल और एस्टिक एसिड चाहिए। पाइनएप्पल एथानोल और ब्यूटेरिक एसिड है। रेस्परी के लिए आइसोब्यूटानोल और फॉर्मिक एसिड है। ये साथ में क्वांटिटी भी दी हुई कि इतने इतने के साथ ये रिएक्शन होगा। विंटर ग्रीन के लिए मेथानोल और सैलिसिलिक एसिड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो नीचे उसने ये टेबल बना दिया है कि आपका ये फ्लेवर है, ये एस्टर है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन 250 ml राउंड बॉटम फ्लास्क। अब आप नीचे देख लें कि हमने जो रिफ्लेक्स का प्रोसेस पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि आपने 250 ml की या कोई भी आपके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है वो लगानी है। उसके अंदर आपने क्या करना है, अल्कोहल डाल देना और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड इन द अमाउंट इंडिकेटेड। जो ऊपर जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं देख लेता ना रेस्परी, तो ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखी है कि ये इतने मोल है, ये इतने मोल है, इतनी अमाउंट आपने लेके इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। Many of the carboxylic acid have a disagreeable order and should be recapped immediately। कि ये जो आपका वो आपका एस्टिक एसिड है तो इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो इनको फिर आपने जैसे ही उसके अंदर फ्लास्क के अंदर डाल देना तो उनको कैप कर देना है, ठीक हो गया। एंड स्पिल प्रिवेंटेड। ब्यूटेरिक एसिड स्मेल लाइक रैंसिड बटर एंड शुड बी डन इन अ हुड। जो फ्यूमिंग हुड नहीं, जैसे आपके पास 109 के लैब के अंदर पड़ा हुआ, तो उसके अंदर ये प्रैक्टिकल किए जाते हैं। स्लोली ऐड 5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्वेल। ऐड अ कपल ऑफ बॉइलिंग चिप्स एंड रिफ्लेक्स फॉर 2 आवर। ये जो आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। और बॉइलिंग चिप्स का मतलब होता है ये बॉयल बम्पिंग स्टोन होते हैं। इससे क्या होता है कि रिएक्शन जब जब आप उसको हीट करते हैं तो हीटिंग के दौरान ये बम्पिंग नहीं होती, ठीक हो गया। बम्पिंग से अवॉइड करने के लिए या बम्पिंग स्टोन डालते हैं, बॉइलिंग चिप्स डाल देते हैं, या सिंपल तो कोई भी ग्लास अपरेटस आपके पास अगर टूटा हुआ है तो उसके छोटे छोटे पीसेस डाल दें, ताकि बम्पिंग का जो प्रोसेस है यानी कि यकदम उठ के वो जो बाहर मटेरियल आपका आता है ना वो ना हो, तो ये आपने डाल देना। और दूसरी कोशिश ये करें कि आप फ्लैट कंडेंसर की बजाय ना स्पाइरल कंडेंसर यूज करें, उसमें मटेरियल भी आपका बाहर नहीं आता। कूल द मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर एंड ये हो गया। द रिफ्लेक्शन विल अलाउ द मिक्सचर टू हीट विदाउट लॉस ऑफ कंपोनेंट थ्रू इवेपोरेशन। क्योंकि वो रिफ्लेक्स हो रहा है, पानी जा रहा है, उसमें से वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे। So the vertical condenser return the evaporated liquid to the boiling flask. Cool the mixture to room temperature and pour into a separating funnel. Rinse the flask with several portion water and carefully add to the separating funnel या separatory funnel। अब सेपरेटरी फनल के अंदर जब आप डालते हैं तो उसके अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के साथ साथ उसके ना वो नोजल होती है बॉटम की तरफ, तो जैसे मैंने 2-3 दफा शेक किया है ना, शेक करने के बाद विगोरसली शेकिंग उसके अंदर करनी है। और साथ फिर मैं क्या करूंगा कि जो बॉटम की तरफ नोजल है ना उसको ऊपर की तरफ उठाऊंगा, ऊपर उठा के उसको थोड़ा सा खोलूंगा कि उसके अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस होंगे वो निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसका जो ढक्कन है ना वो ऊपर से निकल जाएगा, वो ना निकला तो आपकी सेपरेटिंग फनल जो है वो फटने का खतरा होता है, ठीक है। Carefully add ice cold water to the funnel until the aqueous layer is about twice the volume of the organic layer. This will remove excess acid. Extract and separate the organic layer from the aqueous layer. Make sure you know which layer is which, यानी कि कौन सी आपने लेयर जो सेपरेट करनी है। उसमें ना दो आप उसको शेक करने के बाद कुछ देर के लिए स्टे कराएंगे ना तो क्लियर उसके अंदर दो लेयर आपके पास आ जाएंगी, एक वाटर की होगी, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक की लेयर होगी। इफ द एस्टर एंड वाटर लेयर डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ सिमिलर डेंसिटी, add about 30 ml of methylene chloride. The lower layer will be the ester and
मिथिलीन क्लोराइड, यानी कि जो नीचे वाली आपकी लेयर होगी उसमें आपका वो एस्टर आ जाएगा ना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। ठीक हो गया। द मिथिलीन क्लोराइड can later be removed in the final distillation by slowly heating with the warm water bath. Extract the organic layer with an equal volume of cold water, cold sodium 10% sodium bicarbonate solution. This will neutralize excess acid, जो उसके अंदर एसिड होगा तो उसके साथ रेड कर लेगा, and convert any remaining carboxylic acid to a soluble salt. Remember to frequently release the pressure in the separatory funnel. ये जो बात मैंने आपको पहले की है। Test the organic layer with blue litmus and repeat the extraction with fresh sodium carbonate. ये आपने pH चेक करनी कि उसके अंदर एसिड तो नहीं आ रहा। अगर एसिडिक pH आ रही है तो उसके अंदर फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर लें और until all the acid is removed. Transfer the organic layer to a 125 ml aluminum flask and add enough N-हाइड्रोसोडियम सल्फेट। N-हाइड्रोसोडियम सल्फेट उसके अंदर डालेंगे ना तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होगी ना वो ऑब्जर्व कर लेगा। टू कवर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, allow the crude ester to stand until the liquid clear. Add additional sodium sulfate if necessary. Decant the dried ester into a 250 ml flask and distill. Decant का क्या मतलब होता है? निथारना। Collect the boiling fraction in the boiling point range listed by for your particular flavor. Using stoichiometry, determine the percentage of your product and the boiling point. कि जो आपके पास प्रोडक्ट आई उसके आपने क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी या आपने उसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेनी है और साथ में उसका क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेना है। तो ये सिंपल सा आपका प्रोसीजर है कि आप एस्टर किस तरह बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ एस्टर कैसे होगी। क्लियर जी क्लास? जी क्लियर है क्लास? जी सर। क्लास अब कोई जी क्वेश्चन सर। है तो बताएं, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने तो बताएं, जल्दी करें। नो सर। ओके, तो ये अब आपका हो गया एक ये जनरल प्रोसीजर बताया हुआ कि किस तरह आपने एस्टर बनाना है। अब ये हम एक छोटी सी ना ये वीडियो देखते हैं, ये एस्टर सिंथेसिस की है, ये मिथाइल बेंजोएट उसने सिंथेसाइज किया है। Hello and welcome to my garage. Tonight I'm going to be preparing methyl benzoate, an ester with a nice fragrance that I'm also going to be using to make benzonitrile in a future video. Now to do this, I'm going to be using the very common Fissure Esterification, whereby a mixture of acid and alcohol is heated in the presence of an acid catalyst to establish the equilibrium between the reactants and the product ester along with water. Now, since acid catalyzes this reaction both directions, the main limiting factor is the concentration of water in the reaction. There are a few ways to deal with this. Adding a large excess of acid catalyst protonates a lot of the water and removes it from the equilibrium. Alternately, and much more commonly, you use a large excess of typically the alcohol in order to push the equilibrium to the right. And lastly, you can remove the water by azeotropic distillation from the reaction mix. Now, certain esters immediately form an azeotropic water and allow it to be removed from the mix. With methyl benzoate, this is not the case. So I have to go to another way to get that water out of there. And that's going to be through a ternary azeotrope. So in this glass, I have 365 milliliters, or about 10-fold excess, of methanol. It is 9 grams, about a 10 mole percent amount of concentrated sulfuric acid. And in this beaker here, I have 109.9 grams, or 0.9 moles of freshly recrystallized benzoic acid.
So I'm just going to go ahead and add all that benzoic acid to this flask. ठीक हो गया, ये Also इसमें going to बेंजोइक add एसिड डाल दिया है. azeotroping agent. In this case, 50 milliliters of chloroform. Now, methanol, chloroform, and water together form a ternary azeotrope, boiling at about 52 degrees Celsius and containing roughly 4% water. Normally, methanol and chloroform also form an azeotrope, but the water-containing one will be preferentially formed as it has a lower boiling point, at least when water is present, that is. So how to remove the water from that azeotrope as it's distilled? I have elected, and I'll show you in a minute, to use a socklet extractor setup to remove water. And this is based on the Oregon prep, of diethyl oxalate, whereby they use a carbon tetrachloride ethanol water azeotrope to remove water from a reaction mixture generating diethyl oxalate. In that case, they condense the distilling vapor and run it through a column of anhydrous potassium carbonate, which absorbs the water. However, this setup is rather complicated and I don't have the equipment to build it. So I opted for a more modern and more convenient setup. Here I have a socklet extractor with a pad of cotton wool in the bottom, and on top of that, the majority of a mole of granular anhydrous magnesium sulfate. Now, the solvent will boil, and the azeotrope will come up the outer arm, whereby it condenses. Also, I have a Friedrich condenser up top to make sure all of the azeotrope condenses, and that's protected by a calcium chloride guard tube. अच्छा, ये जो इसमें आपको जो ये जो वाइट इसमें नजर आ रहा है, ये ऊपर इसने जो दिखाया था ना, वो एनहाइड्रस मटेरियल होता है मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए. This little U tube in here, and when it fills up to the top of the U tube, solvent pours over, starts a siphon, and drains all of the contents of here into the lower flask. However, of course, since the desiccant is insoluble in the distilling solvent, and because the cotton wool is there to keep it from getting into that tube, the solvent, the desiccant, which will absorb the water, remains in the socklet extractor. So I'm just going to start this on a reflux and keep it there for quite a bit. Okay, so I've had this refluxing for about 3 hours now. The socklet is filled and emptied about 10 times, and I can no longer detect much in the way of benzoic acid in the reaction mixture. And the way you do this is to take about a half mil of the reaction mixture and place in a test tube, let it cool, then take an equal amount of 10% ammonium hydroxide solution and squirt it into the reaction mixture, which will cause it to cloud as an organic phase separates, and ensures good mixing of the two to extract any benzoic acid as ammonium benzoate. Then dilute it with about 2 to 3 mils of water, swirl it around, let it settle, then pipette off some of the supernatant into another clean test tube and add a large excess of hydrochloric acid and scratch the walls of the test tube to induce crystallization if it's going to happen. I've been testing about every half an hour since about an hour and a half in, and the amounts of benzoic acid have become progressively less. And then this last test, there was almost none at all. So I'm just going to let it stop. I'm going to turn it off now and remove the foil so it can cool down. I'm going to turn off the heat.
अच्छा, मैंने आपको वहां पे बताया कि बम्पिंग स्टोन आपने डाल देना है, हीटिंग इसको करना है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है कि यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक बेड डाल के ना इसको हीट कर रही है हॉट प्लेट पे। आप इसको वो उस पे बर्नर पे भी कर सकते हैं और बम्पिंग स्टोन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसके अंदर मैग्नेटिक बेड डालें और ये हॉट प्लेट पे आप इसको हीट कर लें। Turn off the stirring, फंक्शन दोनों का एक ही है। and we'll just let this sit overnight. The reaction mixture is nice and cool now, and I've just disassembled the rest of the apparatus, and I stoppered the flask to keep any water from getting in there prematurely. So what we have to do now is remove the sulfuric acid catalyst, we have to remove any unreacted benzoic acid, and we have to remove the methanol. So how I'm going to do this is through a series of washes. So my first wash is going to be 250 milliliters of 1 molar sodium bicarbonate. Just going to start stirring here and then pour this in through the neck of the flask. Now that it's stopped releasing carbon dioxide gas, I'm going to turn off the stirring, let it sit and phase separate. All right, so I've got 2 clean phases. Unfortunately, the organic phase tends to absorb and hold carbon dioxide, so it's been bubbling a little bit almost constantly. I don't have a set funnel that can accommodate all this liquid, so I'm going to simply remove the upper aqueous layer by decanting it. I'm going to decant it into this 1 liter beaker containing a stir bar and an additional 100 mils of water. All right, I'm okay with the little bit that's left in there. Just going to put this on the side. And I'm going to extract this with 50 additional milliliters of chloroform just to make sure I don't lose any of my product. I'm going to stir this gently for a couple minutes and then let it settle. After settling, I transferred the lower chloroform layer back into this flask. And as it sat, the layers got a little bit cloudy. I'm not sure why. But my second wash is going to be 200 mils of distilled water. And this is mostly to remove methanol that might be dissolved in the organic phase. Although I suspect that I've already removed most of it. So I'm just going to stir for a few minutes and then let it settle. So the 2 phases in this case didn't want to separate all that well. They're both still cloudy. But despite that, I'm going to go ahead and separate them anyway. I'm going to decant off as much of the water phase as I can. That's the upper phase. And I'm going to transfer the lower phase and what water is left into this 250 ml separatory funnel. I'm just going to go ahead and drain off the lower layer, dump out the aqueous layer, and return the organic layer to the set funnel. I've got just the organic phase into the set funnel now, and I'm going to give it a final rinse with 50 milliliters of saturated sodium chloride brine. So frustratingly, the organic phase doesn't want to clear, so I'm just going to go ahead and drain off the organic layer and dry it. I'm going to just drain it into this 250 ml Erlenmeyer flask. Right, and I'm just going to dry that with a little anhydrous magnesium sulfate.
All right, that's looking pretty good. So I'm just going to cover this with some aluminum foil and let it sit to finish completely drying. After allowing the organic phase to dry over that magnesium sulfate overnight, I filtered off the desiccant, put the organic layer in this 500 ml round bottom flask, and did an atmospheric distillation to remove any low boiling material, any leftover methanol, any traces of water, the chloroform. And what I got was this, which I suspect is mainly chloroform, but based on smell, I know. अच्छा, डिस्टिलेशन के लिए जब आपने कंडेंसर यूज करना है तो ये फ्लैट होना चाहिए। स्पाइरल आप यूज करेंगे तो वो फिर डिस्टिलेशन बहुत टाइम ले जाती है, तो ये स्पाइरल नहीं, फ्लैट कंडेंसर आप यूज करेंगे। It was a little methyl benzoate, but it is all chloroform. Theoretically, I've recovered about 60% of that I used. I think a lot of it got trapped in the magnesium sulfate at the beginning of the reflux procedure. And that's just because it's porous, and the first thing to come over would have been the chloroform methanol azeotrope, because there was no water present at that point. And I think it just got immobilized inside the solids. So in the future, it might be beneficial to pre-wet that material with dry methanol before starting the reflux procedure. So I'm going to save this, clean it up, redistill it, and get some of my chloroform back. But what you have in front of you is the remainder of the organic layer. Everything boiling under 100 Celsius has been removed, which rules out any positive azeotropes at all. So our crude product is a nice, very pale yellow liquid. I took all of the adapters, the condenser, the vacuum adapter, and I cleaned them. And I've set it all back together with grease. I've pre-weighed my receiving flask. And I'm going to proceed to do a vacuum distillation of our crude methyl benzoate. Now, methyl benzoate boils at 199 Celsius atmospheric pressure. And with my 32 torr vacuum, I should push it down to just about 100 Celsius, making this significantly less painful than it would be at atmospheric pressure. So I'm just going to start stirring. Turn on the heat. And I'm going to pull a vacuum on the system and begin our distillation. Distillate is coming over pretty damn fast, and the temperature at the still head is varying between about 113 and 115 Celsius as the vacuum fluctuates a bit. And as you can see, there's condensation all the way up here. This always happens with vacuum distillation. I'm not really sure why, or if it's just my particular thermometer adapter. But that makes the thermometer seriously over immersed. So the boiling point is probably more like 110, 111. And here is our final product, 93.65 grams, or a 76.4% yield of methyl benzoate. The still head temperature remained essentially the same throughout the distillation, climbing only slightly at the very end when there was essentially no liquid phase left. And I believe that's due to superheating of the vapor in the flask before passing into the three-way adapter, and not the distillation of a different substance there. So I didn't have any problems, including that last mill or two along with the other product. Now the yield's a bit lower than I'd like. Yields in the 80 to 90% range would certainly be possible with this reaction. The sodium bicarbonate wash, after neutralizing the sulfuric acid, could not have removed more than about 10% of unreacted benzoic acid. And there really wasn't any left, as the distillation was fairly clean, leaving only a trace of solid at the end. I probably should have used more water there, because the
roughly 50-50 methanol water mix I had generated probably still had appreciable solubility for methyl benzoate. So what can you do with this stuff? Well, if you've seen my previous video on the Grignard reaction, you know that you can react with strong nucleophiles to generate tertiary alcohols. They can be selectively mononitrated in the 3 position, generating methyl 3-nitrobenzoate by mixed acids per org-sim. Treatment with sodium metal in an inert solvent like xylene leads to an acetylene condensation, in this case giving you benzoin. It can be used in cross-Claisen reactions, for example with acetophenone, thereby generating dibenzoyl methane, a useful ligand. It can be reduced with sodium metal and ethanol by called a Boviol blank reduction to benzyl alcohol, the same reduction being affected by lithium aluminum hydride. Treatment with diisobutyl aluminum hydride at low temperatures would generate benzaldehyde from this. You can transesterify it with a basic or acidic catalyst in a large excess of a different alcohol to give you other benzoate esters. And lastly, you can do something like an aminolysis, where treatment with ammonia or another amine, primary or secondary, generates the acid amide from the ester. And that's what I'm going to be doing with the majority of this stuff in a future video. So let's go to a mechanism. The mechanism of the Fissure esterification shares many similarities with other mechanisms that I've showed you before, but it still has some of its own unique features. Now, we've previously used carbonyl carbons as electrophiles. As you may remember, aldehydes and ketones are pretty good. Esters are less good because they have the alkoxy fragment, which donates electron density. And carboxylic acids are usually pretty terrible, mainly because most of these reactions occur under alkaline conditions, where the carboxylic acid would be deprotonated, and the O- that then exists here instead of the OH that donates significantly more electron density, basically killing the ability of the carbonyl carbon to function as an electrophile. However, in this case, we're not working in basic conditions, we're working in acidic conditions. But the carboxylic acid by itself is still a pretty bad electrophile. So we're first going to activate it. And that's where the sulfuric acid comes in. This carbonyl oxygen has lone pairs, and it can serve as a Lewis base. So it's going to do a nucleophilic attack on the hydrogen of sulfuric acid, popping it off and forming bisulfate anion. Now, everything in this reaction occurs in equilibrium, so I'm going to be drawing equilibrium arrows. This reaction could go in reverse just as equally, reforming benzoic acid and sulfuric acid, as can any steps that I'm going to show you easily will go in reverse. So the product of this reaction is a protonated carboxylic acid with a positive charge riding on that oxygen there. And it might help you to sort of remember this resonance form, where we have a positive charge on the carbonyl carbon. Now, don't get me started on resonance forms. They're basically affixed to the broken 2-electron bond model, but they make the model work better and give it predictive abilities that MO molecular orbital theory is a much better way to model sort of these systems, but I'm not going to get that much more into it. You can look it up on your own free time. So now that we've activated the carboxylic acid, we now have this positive charge, which means that this oxygen is withdrawing even more electron density from the carbon, and we've now turned our carboxylic acid into a pretty good electrophile. We're not an alkali solution. We don't have hydroxide or alkoxide or carbanions floating around. We don't even have water.
But we do have methanol. And methanol has lone pairs on its oxygen, which can do a nucleophilic attack on our carbonyl carbon, pushing up electrons to the oxygen, neutralizing that positive charge, and it effectively gets shunted down to the alcohol oxygen. So again, in equilibrium, we now form our good old friend, the Tetrahedral Intermediate. Nobody could have seen that one coming. All right, so I'm not sure if this next step happens intermolecularly or intramolecularly. But the gist of it is that one of these oxygens ends up with a proton from this. क्लास समझ आ रही है? जी सर. And we get this form where we're no longer protonated on the alkoxy fragment, but on one of the hydroxys. And now is the time for our tetrahedral intermediate to collapse. Electron density drops down, reforming our protonated carbonyl carbon. And of the two things here, the protonated form, which generates water as a leaving group, is much better as a leaving group than the methoxide that would have to leave here. So we kick that out, forming water. We generate the protonated ester. And then something has to come in here and deprotonate this to generate our final product and continue the mechanism back to the beginning, since our sulfuric acid is catalytic. So what might attack this is most likely methanol. It can be bisulfate if you want. In any form, there's going to be an acidic proton still floating around in solution. So let's just use bisulfate. Comes in, attacks that, drops that down. And at long last, we've generated our product, ester, the methyl benzoate. Now, all these steps that I've shown you are reversible. They can easily go backwards. If you dilute the solution with water and reflux it for a while, you'll end up with a solution containing mostly the acid instead of the ester. Whereas if you use the concentrated alcohol solution containing no initial water, and you swamp out the water in equilibrium with a large amount of alcohol, you end up with mostly ester by equilibrium. In fact, refluxing an ester in acidified water is one way to generate the free acid from it. So if I took ethyl acetate, sulfuric acid, and water and refluxed them for a couple hours, I'd have an almost pure product of acetic acid and water containing small amounts of ethanol. So that is the mechanism for the Fissure Esterification. Thanks for watching. जी क्लास समझ आ गई? क्लास यस सर. बेटा मैंने आपको जो बताया था प्रोसीजर जर्नल था, इसने मिथाइल बेंजोएट के साथ एक्सप्लेन किया है. अच्छा, जो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका एसिड है ना, वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और जो आपने इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि जो एसिड यूज किया है, उसके कार्बोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए आपका एसिड यूज होगा. एक्टिवेट करेगा मतलब कि जो आपका ऑक्सीजन है ना, उसके साथ H लगेगा तो वो पॉजिटिव के साथ आ जाएगा. क्लियर हो गया? फिर वहां पे आपका अटैक होगा जो दूसरा आपका रिएजेंट है जो अल्कोहल है.
क्लियर हो गया? तो ये था आज का आपका प्रैक्टिकल। इसके साथ और भी एक इसमें ये आपका पीडीएफ दिया हुआ है। ये मिथाइल बेंजोएट का है, जो अभी आपने वीडियो देखी ना, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या लेना है। लेकिन ये बहुत सिंपल सा करके लिखा हुआ है, तो तैयार करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी? कोई क्लास बात पूछनी है तो बताएं। कोई नहीं, ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग। नो सर।